दर्पण से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आगे का आपको चाहिए एमसीक्यू तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके आगे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखिए, विच एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फॉर्म इनपुट ऑब्जेक्ट्स, which of the given below is an example of input elements? All of these. Which tag is used to implement input elements in the form? तो सी आंसर है ए और बी। Which attribute is used along with input tag? इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरे वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। Which attributes of the input elements specifies the file that is to be created in the form? A आंसर है type. What is the use of type attributes? आंसर है A, to specify the file that is to be created. 46. Which attributes of the input element specifies the name of name to be used for the file in the form? आंसर है बी, name. What is the use of name attribute? आंसर है बी, to specify the name to be used for the file. Which attributes of the input elements specify the default value of the file in the form? आंसर है सी, value. What is the use of value attribute? आंसर है सी, to specify the default value of the file. Which are the various input elements that can be created using types of attributes input tag? आंसर है डी, all of these. Which input elements is used to enter text in the form? B आंसर है text box. Okay. From the given option below, what is the text box used for? Answer है D, all of this. Which elements is used to create text box in form? Answer है A, text. Which type of data can be entered in the text box? All of this. What is the syntax of creating text box in the form? Answer B है which element is used to create password filed in form? A आंसर है password. A password field is similar to which of the following? B आंसर है text box. In which of the following is characters type are converted into non-readable format? A password. In which form are the characters types in the password field displayed? All of these. D आंसर है. Which of the following does not let anyone read the typed text when user goes login? A password. What is the syntax of creating password box in the form? तो C आंसर है. What is used to select only one option from the given many option in the form? तो ए आंसर है रेडियो बटन. विच एलिमेंट्स इज यूज टू क्रिएट ऑडियो बटन इन द फॉर्म? तो बी आंसर है रेडियो. हाउ मैनी रेडियो बटन्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम मैनी रेडियो बटन्स अवेलेबल इन द सिंगल ग्रुप? ए आंसर है 1. व्हाट इज द शेप ऑफ रेडियो बटन? सर्कल. ए आंसर है. What appears in the circle of radio button which is selected? तो आंसर है सी, डॉट. आगे देखिए, पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी वीडियो. Generally, what is used to select a single item from a given group of item? A, ratio button. Which attribute is used to display a radio button selected by default? C,
checked. What is true form of following for the checked attribute of radio button? B. Optional. What is the syntax of creating radio button in the form? D. What is used to select only one option from the given many option in the form? B. Checkbox. Which element is used to create a checkbox field in form? A. Checkbox. What is the shape of checkbox? B. Square. What appears in the square of checkbox which is selected? Trick. Answer D. Head trick. Which attribute is used to display a checkbox selected by default? C. Checked. What is the syntax of creating checkbox in the form? A आंसर है. Which button is used to send the value of data entered in the form? ये C आंसर है, submit button. Which button is used to send the value of the data entered in the form to the server? इसका आंसर B है, submit button. On clicking which button the value of the data entered in the form is submitted to the file specified in the action attribute of the form elements. इसका आंसर सबमिट बटन. What is the syntax of creating submit button in the form? A आंसर है. On clicking which button the value of the data entered in the form are cleared and set back to default value? D आंसर है, reset button. What is the use of reset button? इसका आंसर C है, A और B. What is the syntax creating reset button in the form? B आंसर है. उसके बाद यहाँ पे देखिए 84 मैच द फॉलोइंग है, तो आप इसको मैच कर लीजिए. देखिए रेडियो है तो इसका आंसर है सी. इज़ यूज टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम ऑल द गिवन ऑप्शन. फर्स्ट है रेडियो, उसका सी आंसर है. इज़ यूज टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम ऑल द गिवन ऑप्शन. सेकेंड है चेकबॉक्स, उसका एफ आंसर है. इज़ यूज टू सिलेक्ट वन और मोर देन वन ऑप्शन एट अ टाइम. थर्ड का है बी आंसर. देखिए थर्ड टेक्स्ट है. बी देखिए इज़ यूज टू ऐड एनी टाइप ऑफ डेटा, टेक्सचुअल डेटा. फोर्थ पासवर्ड का है डी. फिफ्थ का ए और सिक्स का ई. देख लीजिए डी जो ऑप्शन है अपना एमसीक्यू का, जो ये डी है ऑप्शन वो राइट है. अब देख लीजिए. ओके आगे देखिए. विच एलिमेंट्स अलाउ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट इन फॉर्म? तो बी आंसर है टेक्स्ट एरिया. विच एलिमेंट यूज टू इम्प्लीमेंट टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स? आंसर है ए. विच एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट आर टू बी डिस्प्लेड इन द मेन्यू? आंसर है सी ऑप्शन. देखिए विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट द एलिमेंट्स विद इन द मेन्यू? ए आंसर है. उसके बाद विच एट्रीब्यूट्स इज़ यूज टू डिस्प्ले स्पेसिफिक ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट? तो इसका आंसर है डी सिलेक्टेड. What is true from the following for the selected attributes of a radio button? इसका आंसर है बी ऑप्शनल. Which of the following specifies the correct code to create text area elements? आंसर है सी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर. हाउ इज़ डिज़ाइनिंग अ फॉर्म यूजिंग HTML टैग? ए आंसर है tedious. Form can be created easily with which of the following? C आंसर है IDE. What is the full form of IDE? B आंसर है Integrated Development Environment. What is IDE? Software application. A आंसर है Software application. What is true for integrated development environment IDE from the following? तो इस डी आंसर है all of these. आगे देखिए. Which facility is provided for integrated development
environment IDE form the following. D आंसर है all of these. What is full form of GUI? Graphical user interface. A आंसर है. Which is the example of open sources IDE from the following? तो all of these. Which option is true for composer? तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दिस. फ्रॉम विच वेबसाइट कैन कंपोजर बी डाउनलोडेड? तो बी आंसर है. व्हाट इज़ अ सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस विच प्रोवाइड्स वेब पेज एडिटर इन कंपोजर? तो ए आंसर है. व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वाइजीबिग? सी आंसर है. व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. हाउ इज़ व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट in interface? A आंसर है. what you can see the same you can get in the result. Which type of software is composer? C आंसर है. web authorizing system. what does composer integrate? तो इसका आंसर है D both A and B. how can a web page be created using composer? तो सी आंसर है. बोथ ए एंड बी. व्हाट इज यूज बाय यूजर to edit a web page? B answer is source code. In composer, who gives rapid access to the file on both local machine and remote service? Site manager. आंसर है site manager. आगे देखिए. In composer, site manager give rapid access to the file located on which server? तो C आंसर है. both A and B. What can be done to the web page and associate file on the remote associate file on a remote server from within composer? आंसर है B upload. what is used to suppose style in composer? आंसर है A CSS. what is the full form of CSS? D आंसर है cascading style sheet. Okay, which menu option is used to open composer? A आंसर है. एप्लीकेशन प्रोग्राम कंपोजर. अंडर विच ऑप्शन इज कंपोजर डिस्प्लेड? सी प्रोग्रामिंग. विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू प्रीव्यू द डिफरेंट टूल बार एंड स्टेटस बार? तो बी आंसर है. व्यू शो हाइड. विच ऑप्शन इज लिस्टेड इन शो हाइड ऑप्शन ऑफ व्यू मेन्यू इन कंपोजर? तो आंसर है ऑल ऑफ दिस. हाउ मेनी फॉर्मेट टूल बार आर देयर इन कंपोजर? तो इसका आंसर है 2. ए आंसर है 2. विच फॉर्मेट टूल बार आर अवेलेबल इन कंपोजर? इसका आंसर है सी. इसके बाद आगे देखिए. सिलेक्ट द करेक्टली नंबर्ड ऑप्शन टू द पार्ट ऑफ द गिवन कंपोजर इंटरफेस. आंसर ए है. हाउ मेनी मेन्यूज आर डिस्प्लेड इन द मेन्यू बार ऑफ कंपोजर? तो सी 8. which toolbar are displayed below menu bar? तो all of these. what is the use of composition toolbar? all of these. D answer है all of this. what is the use of format toolbar 1 and format toolbar 2? D answer है all of these. In Composer, which toolbar is used to create new file, open file, save file and publish website? A answer है composition toolbar. In Composer, which toolbar is used to format the text, add bullets and numbering and perform similar formatting operations? तो बी आंसर है फॉर्मेट टूलबार 1, फॉर्मेट टूलबार 2. हाउ मेनी पेन्स आर डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द कंपोजर विंडो? ए आंसर है 2. विच पेन्स आर डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द कंपोजर विंडो? आंसर है सी, ए एंड बी. इन द कंपोजर विच पेन्स is a powerful tool used to
navigate within the site or between the site? A आंसर है site manager. Which button is used to close site manager? तो C close button. Which key is used to close site manager? तो आंसर है D function key F9. In composer, what does page pan show? तो D आंसर है all of these. Which toolbar is shown at the bottom right side of the page pan window? A आंसर है edit mode toolbar. How many modes are there in edit mode toolbar? तो B आंसर है 3. Which modes are there in the edit mode toolbar? तो आंसर है all of these. D. Which facility is provided by normal HTML tag and preview mode of edit mode? आंसर है A editing. Which mode of edit mode toolbar is used to display web page along with its table outline? The A आंसर है normal. Normal mode is similar to which mode? The B preview. Which mode of edit mode toolbar is used for those who are familiar with HTML? C HTML tag. Which color marker is used to indicate the start tag for all elements? B yellow. What happens on clicking the yellow marker which indicates the start tag for all elements? A select the highlight whole of the elements. Which mode of edit mode toolbar is used to display the page preview as seen in the browser? C आंसर है preview. From the given mode below, in which mode the script do not run and therefore their effects will not be seen? A preview. From the given mode below, in which mode link do not operate? C preview. In composer, what does it display? To B edit mode toolbar. How many tabs are displayed on the left side of the page pan? A 3. Which tab is displayed on the left side of the page pan? All of these. D आंसर है. Which tab is used to design the web page? A आंसर है design. Which tab display the HTML source of the current element? B split. Which tab show all the details of HTML code? The C source. Which tab helps in editing the source code? C source. What is seen in the bottom of the window? B status bar. When any item in page is clicked, where does its structure appear? D status bar. To customize any toolbar, right click on the respective toolbar and click on which option? A customize toolbar. थैंक यू वॉचिंग कीजिए तो मेरी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचेंगे. From which toolbar is handling selected to give title to the form? A format toolbar 1. How many types of handling are available in paragraph format of format toolbar 1? C आंसर है 6. On which toolbar is align center icon which is used to align from handling in center located? B आंसर है format toolbar 2. How many types of alignment for text are available on format toolbar? C 4. Which alignment is available for text element in composer? D all of these. Which menu option is used to create label in form? तो बी आंसर है insert form और define label. Which menu option is used to create label for input field in form? A आंसर है insert form और form field. Which type of field is useful when only when option from the given option is to be selected? A answer is ratio button. Which menu option is used to create a radio button in form?
आंसर है सी, insert form field. When radio button option is selected in field types, then which option is seen in field setting? D answer है all of this. Which option should be selected when a ratio button should appear selected by default? C answer है initially selected. How should the name of radio button in the same group be? A answer है same. Which menu option is used to create checkbox in form? तो सी आंसर है insert form field. When checkbox option is selected in field type, then which option is seen in field setting? आंसर है डी all of these. Which option should be selected when a checkbox should appear selected by default? डी आंसर है initially checked. Which type of field is used to insert multi-line text box? A answer है radio button. Which menu option is used to create text area filled in form? A answer है insert form text area. Which options are displayed in setting option of text area properties dialog box when text area filled in created in form? D answer है all of the. Where is the text written which should be displayed by default in text area field? B answer है initial text. Whose value should be given to create text area field? A answer है rows column. What should we use when it is not necessary to display all option at time on the screen? C answer है drop down menu. Which menu option is used to create drop down menu in form? B answer है insert form selection list. Which options are displayed in setting list properties dialog box? D answer है all of these. Which button should be clicked to add various option of drop down list? B answer है add option. Which menu option is used to create submit reset button in form? A answer है insert form field. What is by default background color of form in composer? D answer है white. Which menu option is used to change background color of form? आंसर है बी फॉर्मेट पेज कलर एंड बैकग्राउंड. विच डायलॉग बॉक्स ओपन्स व्हेन द सिलेक्टेड फॉर्मेट पेज कलर एंड बैकग्राउंड ऑप्शन टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ फॉर्म? तो आंसर है ए पेज कलर एंड बैकग्राउंड. विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इन पेज कलर एंड बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स टू बैकग्राउंड कलर ऑफ फॉर्म? तो बी आंसर है यूज कस्टम कलर. विच टाइप ऑफ कलर कैन बी चेंज यूजिंग यूज कस्टम कलर ऑफ पेज कलर एंड बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स? आंसर है डी ऑल ऑफ दिस. विच वैल्यू शुड बी गिवन टू टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स ऑफ क्रिएट text box in form? B answer है text. Which value should be given to type attribute of input elements to create password filled in form? B answer है password. Which value should be given to type attributes of input elements to create radio button in form? तो B answer है radio. Thank you for watching my video. आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरे वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचेंगे. ये सेकंड चैप्टर का MCQs है, आप देख लीजिए. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS? कास्केडिंग स्टाइल शीट. बी आंसर है. सेकंड देखिए, अलाउज यू टू स्पेसिफाई स्टाइल फॉर द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट. सी आंसर है CSS. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CSS? तो आंसर बी है द स्पेसिफाई स्टाइल फॉर द विजुअल एलिमेंट्स. उसके देखिए, विच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ CSS? तो डी आंसर है अरेंज द विजुअल एलिमेंट्स. फिफ्थ, डैश इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ कीपिंग द स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट. तो ए आंसर है अरेंज द विजुअल एलिमेंट्स. सिक्स देखिए, डैश कैन बी यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी पुट ऑन इंटरनेट. तो बी आंसर है HTML.
सेवेंथ, स्पेसिफाइज द स्टाइल फॉर द विजुअल एलिमेंट्स। ए आंसर है CSS। उसके बाद 8 देखिए, डैश कैन बी डन यूजिंग CSS। तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए, उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, डैश शीट कैन बी यूज टू ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स इन द वेबसाइट। सी आंसर है स्टाइल। The syntax of CSS consists of special symbols known as B rules. Uh, A CSS rules has dash main part. A answer है 2. 12. CSS syntax use dash brackets. तो B आंसर है। 13 देखिए, dash is not the part of the CSS syntax। तो सी आंसर है HTML डिटेल्स। उसके बाद 14 देखिए, डैश इज टेकन एज द सेक्टर। बी आंसर है HTML एलिमेंट्स। स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू। तो ए आंसर है HTML एलिमेंट्स। उसके बाद 16 देखिए, CSS रूल्स कंटेन्स डैश पार्ट। तो सी, ए एंड बी बोथ। 17 देखिए, डैश इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द CSS सिंटेक्स। तो इसका डी आंसर है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इज सेपरेटेड यूजिंग। 18 देखिए, डैश इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ CSS। तो इसका आंसर है सी, सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, 19 देखिए, एज पर आवर सिलेबस यूजिंग डैश सॉफ्टवेयर CSS इज क्रिएटेड। तो बी आंसर है कंपोजर। 20 देखिए, कंपोजर यूज डैश एज डिफॉल्ट। ए आंसर है CSS। Using dash we can get confirmation that CSS is used by default by composer। C आंसर है A और B। How to open option dialog box in composer। C आंसर है A और B। Dash statement is wrong about the composer software। C, composer can only be used for CSS। Cascade button is on dash toolbar of composer। B, composition toolbar। While preparing a style, if a new file is opened and not saved by giving a file name, then dash dialog box open। B, page title, the elements which is used to define style sheet rule that CSS style sheet dialog box is under dash heading। B, internal style sheet। Dash tab is not displayed on the right side of CSS style sheet dialog box। तो आंसर है बी, नंबर। Dash section is used to give and specify style to the HTML elements। D आंसर है all of this। Dash button is clicked to insert an image as the background while preparing style। A आंसर है choose file। Dash tab display the style sheet rule that is given to elements। A आंसर है general। How many buttons are there in CSS style sheet to prepare style? C, 7। Dash view is selected to see the source code of CSS style sheet। B आंसर है source। Dash is false for CSS style sheet। तो D आंसर है CSS structure make the website slow and inefficient। 34 देखिए, dash is the disadvantage of CSS। तो आंसर है डी, बी एंड सी बोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है थर्ड चैप्टर है, डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। ये थर्ड चैप्टर है और इसका सेकंड डेज का वीडियो है। आपका इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के सब वीडियो मिल जाएंगे। पब्लिशिंग द वेबसाइट इज़ नोन एज। ए आंसर है अपलोडिंग।
The process of publishing a website means to transfer the web page, image, and style sheets related to the site to a website server from which they may be accessed by the user. It is known as dash. तो B है uploading. What is necessary to upload a website? इसका आंसर है डी. ऑल ऑफ दिस आंसर है. अब 45 देखिए. ISP स्टैंड्स फॉर. डी आंसर है इंटरनेट सोर्सेज प्रोवाइडर. डैश ऑफर्स लिमिटेड फ्री स्पेस ऑन द वेब सर्वर. ISP ये आंसर है. ISP. Alternatively, to upload the website, there are many DAS that provide limited free space to the user. A. Web hosts. The free space can also be achieved for a limited time period from a web host. To publish a site, we need to know the setting for the space to set up the system using. B answer है file publish. FTP stands for File Transfer Protocol. फिफ्थ देखिए URL स्टैंड्स फॉर ये यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेशन. 51. ओके 52. डैश इज़ नॉट अ ओपन सोर्स IDE फॉर वेब डेवलपमेंट. तो इसका आंसर है डी नोटपैड. IDE स्टैंड्स फॉर. तो सी आंसर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. What is the functions of open source Aptana Studio? B. Development of web application. Aptana Studio is completed web development environment which provides language support for. D. All of this. We have to study dash version of Aptana Studio. ए आंसर है 2.0.5. Aptana Studio can develop web application use. D. All of this. Dash website is useful to download Aptana Studio. A. www.aptana.com. Aptana Studio open source can be make a project using. तो डी आंसर ऑल ऑफ दिस. व्हाट इज ब्लू ग्रीफॉन. तो बी आंसर है. देख लीजिए. Blue Griffon open source can be easily downloaded from www.bluegriffon.org. Dash language is not supported by Blue Griffon. तो सी आंसर है हिंदी. वी हैव डैश वर्जन टू ब्लू ग्रीफॉन ओपन सोर्स. तो ए आंसर है 1.62. डैश टाइप ऑफ एडिटर्स इज ब्लू ग्रीफॉन. तो बी आंसर है ओपन सोर्स विजबिग टाइप HTML. YCV stand for. C आंसर है what you say is what you get. W3C stand for World Wide Web Consortium. Dash is not a WYSIWYG type of editor. C. Aptana Studio. Amaya was initially started as Dash editor. B. HTML/CSS. Amaya has now grown into the editor for many Dash-based systems. C. XML. Amaya is a type of open source editor. B. Web. Amaya web editor can be downloaded from. D answer it www.3.org/Amaya. This is the some extra MCQs. Which of the following helps the promoting the business, selling and product and attracting a large number of customers? A. Website. Which of the following is not an important point to be considered for developing a good website as part of planning process? D. Input. Which of the following information should a website contain?
A. Complete, relevant. Which of the following content provides an overview of the site, organization, products and services and other items? C. General. Which of the following is collection of interlinked web page? D. Website. Which of the following is an first page that open when the user enter the URL address in the address bar of the browser? A. Homepage. Which of the following file name is the home page of the website saved as? B. Index.html. Which of the following is a variable that is stored on the user computer? C. Cookie. Which of the following stands for FTP, File Transfer Protocol? ये थर्ड चैप्टर का पहला वीडियो है। तो आपको यदि सेकंड चैप्टर का वीडियो या फर्स्ट चैप्टर का चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट स्टार्ट द MCQ क्वेश्चंस। A dash plays a very important role in a business nowadays. तो सी आंसर है वेबसाइट. Which statement is wrong about the website? B. It helps a tracking less number of customers. What is a website? तो C. Interlinked connection of web page. How should be the website? D. All of this. Dash in the website will enable to the company to get the maximum amount of traffic, therefore making the maximum amount of profit. D. All of this. As per our syllabus, dash software is to be used to create website. B. Composer. How should be the planning of the website? A. Interactive. Before creating a website, we should be clear with the dash of the website. C. Both A and B. What should be the purpose of the website? All of this. Having decided to purpose dash of the website can be properly developed. C. Both A and B. What kind of information should be there in the website? All of this D answer है. The proportion of the different type of extent of detailed and specific information depend on the dash. A आंसर है nature of the expected audience. 13 देखिए, the user expectation from the website are important to know for A. It's help to develop the appropriate content and layout of the site. 14 देखिए, in case large graphical files are kept on the website, dash can happen. D. All of this. What kind of information should be there in the website? A answer है complete and relevant. Excessive use of irrelevant information can cause dash frustration to the user as they are unable to seek the specific data. C. Both A and B. What is the advantage of having navigation in the website? D. All of this. 18. Dash ensure that site can serve its intended purpose. D answer है all of this. The website design should scale for the devices like dash. D. All of this. 20 देखिए, the website should be designed keeping in mind that it is well displayed in all the popular web browser like all of this. D answer है all of this. 21. Dash is not the web browser problem. D. Composer. Dash is the entry page of website. A. Home page. The first page of the website is known as B. Home page. The dash of the website is the first page that open when the user enter the URL address in the address bar of the browser. A. Home page.
Generally, what is there in the home page of the website? D. All of this. Dash is useful to insert a table in Composer. B. Insert table. Generally dash name is given to the home page. B. Index.html. Answer है. Where is each website created on web server? A. In a directory. Each website page is an independent file on A. Web server. What is the predefined file used to display content by web server? To C. Index.html. When web server appended the URL without file name, then server displays dash file by default. C. Both A and B. How to insert an image in the cell of the table? B. Insert image. Dash command is used to change the title of the web page. C आंसर है format page title and properties. Dash command is used to give the links to the categories. A. Insert link. When JavaScript is used in the web page, the details are separated using. तो A आंसर है comma. When JavaScript is used in the web page, the details of production are separated using dash. तो इसमें आएगा B. Clone. What is the cookies? तो C. Various stored is used computer. C आंसर है. देखिए डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय कुकीज़. तो सी आंसर है बोथ ए एंड बी. जावा स्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट कुकीज़ यूजिंग द. ए आंसर है कुकीज़ प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. व्हाट कैन बी डन ऑन अ कुकीज़? तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस. वी आर कन्वर्टिंग द डेटा इनटू नंबर बाय यूजिंग फंक्शन. तो इसका आंसर है बी. पार्सेफ्लुएट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिए. सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचेंगे. चैप्टर 4 है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स. दर्पण का ये MCQ स्टार्ट कर रही हूँ. ये फर्स्ट डे है 4th चैप्टर का. आप देख लीजिए. इससे पहले का आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेसन, सेकेंड, थर्ड, आप उसका वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. टुडे वी आर लिविंग इन डैश टाइप ऑफ एन ईरा. तो ए आंसर है इंफॉर्मेशन. सेकेंड, फ्रॉम विच सोर्सेज डू वी गेट द इंफॉर्मेशन. आंसर है डी ऑल ऑफ दिस. थर्ड, विच डिवाइस हैव चेंज द मेथड ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन. बी आंसर है इंटरनेट एंड मोबाइल. इन द बिगनिंग वेबसाइट्स were used for dash. तो आंसर है C. A and B both. Which type of information is provided by the educational website? तो इसका आंसर है D. All of these. Which type of information is provided by the professional website? D आंसर है all of these. Internet has become extremely popular among the individuals as well as business organization. Choose the correct option for the above sentence. A आंसर है true. it देखिए for which reason internet has become extremely popular among the individuals and as well as business organization. तो आंसर है C. A and B both. Dash has made evolutional changes in professional management. तो बी आंसर है इंटरनेट. 10th देखिए डैश कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट. डी आंसर है ऑल ऑफ दिस. 11th देखिए डैश प्रोसेस इज पॉसिबल थ्रू इंटरनेट. डी आंसर है ऑल ऑफ दिस. द यूजेज ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज. ए आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. 13 देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स. द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स.
बी आंसर है। 14 देखिए, ई कॉमर्स कैन रिड्यूस द कॉस्ट फॉर डैश इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। डी ऑल ऑफ दिस। व्हाट विल बी द what will be the speed of distribution on internet if we use e-commerce? B आंसर है less. What type of feature is provided by e-commerce? C आंसर है A and B both. What is the most expanding method of business today? A. Increase sales of product using internet. 18 देखिए, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन ऑन इंटरनेट टुडे? तो आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। 19 डैश हैज़ मेड द होल वर्ल्ड अ ग्लोबल मार्केट वेयर एनी वन कैन परचेज एंड सेल। आंसर है ए ई कॉमर्स। ऑनलाइन बुक स्टोर्स नीड अ गुड वेबसाइट डिस्प्लेइंग। तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। The search of a book can be done by dash, तो all of this. The online bookstores may record, तो C आंसर है A and B both. Dash is the most popular website for online book sales, तो A आंसर है www.amazon.com. 29 देखिए, डैश इज़ द वेबसाइट सेलिंग बुक ऑनलाइन, तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। The digital newspaper available on the internet is called, B आंसर है e-newspaper. E-newspaper means electronic newspaper. A आंसर है। Electronics newspaper gives more advantage than, D आंसर है all of this. Dash gives the instant news of the world. B electronic newspaper. How can electronic newspapers be attractive? तो C A and B both. Electronic newspaper is helpful in dash, C A and B both. Majority of the leading newspaper now provide dash, तो आंसर है C A और B. Dash is the website of e-newspaper, तो इसका आंसर है D all of these. Which is the process of buying and selling product or services by offering the customers to bid the price and selling the product? तो डी आंसर है all of this. The traditional auctions have dash participation of people. A limited. The same auction mechanism can be implemented using dash technology, which allow the people to bid on the internet. C. E-commerce. The bidding on the internet is known as dash. B. Online auction. Dash is the process for people to purchase through bidding. A. Auction. Auction website provide the platform for, C. A and B both. Someone who places the product for auction is called auctioneer. The user who bid the product on internet is called bidder. Okay, to sell an item through online auction dash is needed. First, A registration. To sell product online, registration is required for dash, तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस. मेंबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डैश बिफोर दे आर अलाउड टू सेल, तो बी आंसर है देयर बेसिक कॉन्टैक्ट्स. द नंबर जनरली पुट डैश फॉर बिडिंग. सी आंसर है ए एंड बी बोथ. बाय प्लेसिंग गुड फॉर ऑक्शन ए पर्सन कैन गेट ए डैश, तो बी आंसर है गुड प्राइस ऑफ द आइटम. When the item is transferred to the bidder. C answer है A and B both. How many options are provided to the bidder for the payment? D various. Dash is the advantage of selling item online, तो C answer है A and B both. Which is the website for the online auction? www.eway.com. ए आंसर है. 55 देखिए, डैश इज़ द वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन ऑक्शन, तो डी है ऑल ऑफ दीज आंसर. 56 मैनी कंपनीज नाउ डेज conduct their business of marketing and selling of goods using
डैश वेबसाइट, बी आंसर है वेबसाइट। Companies provide dash online over internet for better marketing. A. Catalog. The catalog display different categories of products with dash. C. A or B. The customer can view the catalog and select the product of their choice by adding them to dash. B. Shopping cart. Online shopping cart is like a basket given in the supermarket. Uh, what can what can customer do in the shopping cart? D. All of this. Order is given at the time of dash in online shopping. C. Checkout. The user need to provide dash in online shopping. A. Shopping details. The payment of purchase is made through dash. So C. Internet. Dash type of products can be purchased through internet. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। विच इज़ द इंडियन रेलवे वेबसाइट? ए आंसर है www.irctc.com in। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RICTC? तो बी आंसर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। What facilities are given by the Indian Railways website www.irctc.com in? तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। हाउ डज द टिकट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड? तो सी आंसर है ए और बी। डैश इज द फेमस वेबसाइट फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। बिल्स आर सेंड थ्रू डैश इन ऑनलाइन शॉपिंग। तो बी आंसर है ईमेल। हाउ पेमेंट इज डन इन द ऑनलाइन शॉपिंग? तो सी आंसर है ए एंड बी। डैश फीचर इज यूज्ड by the companies to send bills to a large number of customers. A answer है online billings. Dash telecommunication company used internet billing. तो सी आंसर है BSNL, BSNL। BSNL स्टैंड फॉर, बी आंसर है भारत संचार निगम लिमिटेड। डैश इंस्टीट्यूट्स यूज इंटरनेट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सी ए एंड बी बोथ। What is provided by educational institute to their student? D. All of this. Which is example of online support service? C answer है A and B both. Which is the example of information service website? A. www.gseb.org. Support service have increased because of dash. सी आंसर है मॉडर्न टेक्निक्स। टुडे द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइज sophisticated electronic which require dash। तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। when the companies provide support to customer। सी after selling the product। सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड ऑनलाइन सपोर्ट फॉर डैश। तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। सॉफ्टवेयर वेंडर्स allow dash to their licensed customer। बी आंसर है टू डाउनलोड रिसेंट अपडेट्स। हार्डवेयर वेंडर्स पुट सॉफ्टवेयर डिटेल्स फॉर देयर device so that the customer can download them by। सी आंसर है ए एंड बी बोथ। dash is getting more popular day by day। तो सी आंसर है ए और बी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड नेट बैंकिंग। ए आंसर है। डैश फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड थ्रू नेट बैंकिंग। तो डी आंसर है ए एंड बी बोथ। द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। ए आंसर है ऑनलाइन बैंकिंग। डैश इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। तो सी आंसर है पासवर्ड। डैश फैसिलिटी is given to customer through online banking। तो D all of this। Dash is the website for online banking। तो D आंसर है all of this।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ड्यू टू डैश डूइंग बिजनेस हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। बी आंसर है ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट एंड यूजिंग ई कॉमर्स। विच is the feature of traditional business? D answer है for specific period or process done in the particular hour. In traditional business what type of competition is done? Answer है C, A and B both. Which type of products is difficult to sell through e-commerce? All of this. Buyers will hesitate in buying. D answer है all of this. The arrangement of product, store design and layout is called merchandising. A answer है. Dash is the common feature of traditional business. Answer है D all of this. Dash is the common feature of e-commerce. All of these. D answer है all of this. Is the dash is the feature of e-commerce. तो B आंसर है use of internet for advertising for of products. The variety of product and service make online shopping. C आंसर है A and B. E-commerce has given dash change. Uh, all of this. D आंसर है all of this. Dash is the factor for growth for e-commerce in India. D answer है all of these. Due to dash traditional purchase is decreasing. All of these. Why e-commerce products are cheap online? C, A and B both. Due to dash website online market and locations have developed. All of this. D answer है all of this. Internet introduced in India dash compared to other countries late. A answer है late. E-commerce is developing with tremendous speed of India. Why? A and B both. C answer है A and B both. Which online stores are popular in India? All of this. D answer है. Retail vendors have started dash mode of payment. Cash on delivery. A answer है. Dash mode of payment is most popular in India. Cash on delivery. C answer है. Cash on delivery is a dash method according to online retail vendors. B answer है costly. Cash on delivery is dash method according to online retail vendors. Why? They have to finance the scale till the order is delivered. Uh, Dash is easy for customer when the cash on delivery is done. B answer है to reject the product. Industry experts are dash about the future of potential of e-commerce in India. Optimistic with the growth of internet. Companies are dash. C answer है A and B both. E-commerce provide dash benefits to the customer. Answer है D all of this. E-commerce sales would rise in the coming year with. C answer है A and B both. Dash shown the benefits of e-commerce. All of these. D answer है all of these. Which is not advertise of e-commerce? A. Security. Which is the disadvantage of e-commerce? Security. D answer है security. देखिए डैश टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी डन थ्रू ई कॉमर्स. सी ए एंड बी बोथ. ई कॉमर्स बिजनेस इज नॉट बाउंड टू. ए आंसर है टाइम. ई कॉमर्स कैन एक्सेप्ट द ऑर्डर एट ऑल ऑफ दिस. डी आंसर है. विच टाइप ऑफ कॉस्ट which type of cost is reduced through internet business? D answer है all of this. Investment is e-commerce would be dash compared to traditional business less. A answer है. Investment in traditional business would be dash compared to e-commerce. B answer है more. Customer are benefits with a wide range of products of selection. Why? A answer है elimination of distributors और eliminatories. देखिए लोकल स्टोर इज एक्सपांडेड टू डैश एरिया. तो सी आंसर है लिमिटेड. ई कॉमर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डैश कस्टमर ऑनलाइन.
ए आंसर है मैनी। ट्रेडिशनल बिजनेस कैन बी सेव्ड टू न्यूमेरियस कस्टमर। फॉल मतलब बी आंसर है फॉल्स। As there is a direct communication with customer dash is possible to communicate. D answer है all of these. Customer favors dash type of customer service. A online. E-commerce provide dash type of customer service. C A and B both. Information can easy be shared on internet. Choose the appropriate option. A true. Through dash vendor informs to the customer about service. सी आंसर है, सॉरी डी आंसर है ईमेल्स। उसके बाद देखिए अ मर्चेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर थ्रू सी ए एंड बी। How many companies can merge to provide service in email e-commerce? B. More than one. Dash is the best example of teamwork. Email. A answer है. Through dash people communicate. C. Email. Communication improve for whom when email system is used. All of this D answer है. What type of result does the email communication provide? A. Better. In a e-commerce customer has to travel long to get product. Choose the appropriate option. B. False answer है. How is the e-commerce business compared to the traditional one? A. Fast. Due to dash e-commerce business is faster than the traditional one. C answer है online transactions. What type of benefits does the e-commerce give to the society? Answer है D all of these. E-commerce has some limitations. A. Yes. Which option shown the limitation of e-commerce? D. All of this. Business organization need to change from traditional business to e-commerce is faced by dash. The A है resistance. People need to get used to dash in e-commerce. C answer है A and B both. How is the initial investment to start e-commerce business? B. Significant. E-commerce change the basic traditions of business. Choose the appropriate option. True. A answer है true. For what initial investment is needed in e-commerce? तो सी आंसर है ए एंड बी बोथ. Dash is needed to the staff to understand why of conducting business in e-commerce. B answer है training. Dash is primary concern in e-commerce. A. Securities. The information of what traveling on internet should be protected from unauthorized access. C answer है A and B both. Security against dash is needed in e-commerce. C answer है A and B both. The dash is customer is a serious issue. B. Security. Why people hesitate to put their information on internet? A answer है the hacker might interrupt the information. Uh, Unnecessarily emails sent by the companies are called spam. C answer है spam. The dash might interrupt the personal information. B. Hackers. Which type of fraud can be given financial loss customer? Credit card. A answer है credit card. E-commerce is to be secured from. Answer है D all of this. Due to dash there is a lack of trust in e-commerce. All of this. D answer है all of this. Returning defective goods online is dash issue. Difficult. A answer है difficult. What type of question arise to user in online purchase? D answer है all of these. In which mode a product can be purchased from the local store? A. Traditional. What is consumed in sending product in e-commerce system? C answer है A and B both. Which type of product is not favored by the
people via e commerce. तो डी आंसर है ऑल ऑफ दिस. The online shops can be provided. D all of these. Products to sell are tricky. तो C A and B both. Which type of financial transactions are not generally preferred by people? C A or B. Regular updation to be done online for small institute create. B difficulties. E-commerce is dependent on A internet. Resistance in dash in dangers for e-commerce. आंसर है सी इंटरनेट कनेक्शन. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. तो सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियोस